स्पीकर साहब, बहुत अहम मौजू है प्राइवेटाइजेशन। अफसोस से कहना पड़ता है कि हुकूमती अरकान या फ्रंट बेंचर्स अपने ही एजेंडा को खुद सबोताज करते हैं। होना तो ये चाहिए कि डिबेट एक ही सिमत में चले, लेकिन ख्वाजा साहब ने प्राइवेटाइजेशन के हवाले से बात की, लेकिन वहां से फिर सियासी जवाब आए और फिर वो टेम्पो जो है प्राइवेटाइजेशन के हवाले से वो आपने खुद ब्रेक किया। अब मैं मजबूर हूं कि मैं दो तीन इश्यूज जो मेंबर साहब ने रेज किए हैं, मिनिस्टर साहब ने, मैं उनके ऊपर बात जरूर करूंगी और उसके बाद डेफिनेटली आई रेज जो मेरे पॉइंट्स हैं प्राइवेटाइजेशन के ऊपर, क्योंकि मैंने कुछ इश्यूज जो है वो इधर ड्राफ्ट किए हैं। सबसे पहले तो मैं भी ये जो रात के अंधेरे में एक और ऑर्डिनेंस दी गई, इशू इज नॉट व्हाट द वियना कन्वेंशन सेज, इशू इज नॉट व्हाट द जजमेंट इन द आईसीजी केस सेज अबाउट कुलभूषण ऑर्डिनेंस। इशू ये है कि इस पार्लियामेंट को इतने अहम नेशनल सिक्योरिटी इशू से आपने दूर रखा, जो काबिले मुजम्मत है। जितने भी इधर मेंबरान बैठे हुए हैं, किसी एक को नहीं पता। 4 दिन पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने, तो हमें पता लगा कि ऐसी ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट हुई है। दिस पार्लियामेंट्स प्राइमरी फंक्शन इज लॉ मेकिंग। ऑर्डिनेंस आप मजबूरी में उस वक्त करते हैं जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो। क्या मजबूरी थी कि 20 मई को आपने एक ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट किया, वो छपा और किसी को इधर पता ही नहीं है। आज लैप्स हो रहा है, द ऑर्डिनेंस इज लैप्सिंग एंड दिस इज द इशू। और सिर्फ ये वजीर साहब अपनी बात कहकर चले गए, सिर्फ ये बता दें कि अगर पीपल्स पार्टी का दौर होता या नून का दौर होता और कुलभूषण बचाओ भगाओ ऑर्डिनेंस जारी की जाती, तो कितने कंटेनर इस मुल्क में आ जाते और कितने कंटेनर वाली स्पीचेस होती। तो ये काबिले मुजम्मत है, वील पुट इट ऑन द रिकॉर्ड। और ये पार्लियामेंट को अंडरमाइन कर रहा है। जनाब स्पीकर, जो डिस्टेंस, द इशू कल बहुत बड़ा इशू शायद ये ना बनता कि अबाउट 7 मेंबर्स जो हैं कैबिनेट के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेंबर्स, स्पेशल असिस्टेंट्स, एडवाइजर्स, 7 उनमें से निकले रेजिडेंट्स, कोई कनाडा का रेजिडेंट, कोई यूएसए का रेजिडेंट, और 4 उनमें से ड्यूल नेशनल्स निकले। शायद ये इशू भी इतना इशू ना बनता अगर माजी में आपने खुद ढंडोरा ना पीटा होता। खान साहब की तकारीर चल रही हैं, बार बार ये कह रहे हैं कि ड्यूल नेशनल्स जो है वो खुदा ना खास्ता उनको उन्होंने तो गदार के डाला था। ड्यूल नेशनल्स के ऊपर डिबेट होना चाहिए, लेकिन जो आपने टर्म सेट किए हैं, जो आपने स्टैंडर्ड्स रखे हैं कि ड्यूल नेशनल्स जो है वो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स नहीं बन सकते, एमएनएज एमपीएस नहीं बन सकते, तो वो आपको अब मानना होगा। वील मेक श्योर दैट यू इंप्लीमेंट इट। वी डिमांड ऑन द फ्लोर ऑफ दिस हाउस कि ये जितने भी 7-8 लोग हैं अपनी रेजिडेंसीज जाके रख के आए, अमेरिका, सिंगापुर, अपनी ड्यूल नेशनैलिटीज जाके रख के आए, अपने असासे इधर लेके आए। और खास ये सुने जो वजीर जो कहते थे कि मैं पता नहीं कितने डॉलर तमाचे मारूंगा, पता नहीं किसको, वर्ल्ड बैंक को, ये सारे डॉलर लेके आए। वी नीड देम। ये सारे वजीर लेके आए। ये टर्म्स आपने सेट किए थे, हमने नहीं। एंड वी आर नॉट अगेंस्ट ड्यूल नेशनल्स। वी डोंट इवन चैलेंज द फैक्ट कि उनकी मुहिबुल वतनी को भी हम नहीं चैलेंज करेंगे। आफ्टर ऑल हमारे रेमिटेंसेस आ रहे हैं, हमारी एक्सपैक्ट कम्युनिटी है, ओवरसीज है, लेकिन ये आपने जो किरदार कशी की है वो। एंड द सेकंड पॉइंट इज, एंड दैट्स व्हाई प्राइवेटाइजेशन का डिबेट मैं इस फिरके से शुरू करूंगी स्पीकर साहब, कि इनकी कैबिनेट ही प्राइवेटाइज्ड है। इट्स रेंट अ कैबिनेट, करीम कैबिनेट। व्हाई एम आई सेइंग दैट? बिकॉज टुडे वी ऑल फील कि इस नॉर्मली पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का हुस्न ये है
کہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں پارلیمنٹ سے پاور سٹیم ہوتا ہے, وزیر اعظم لیڈر آف دا ہاؤس ہوتا ہے, اور جو کابینہ کے ممبرز ہوتے ہیں وہ سب جنرلی اسپیکنگ, generally advisors are allowed, but generally speaking they are members of this house. تو ایک کنیکٹ ہوتا ہے, کنیکٹ. Today there is a disconnect between this house and between the کرائے کی کیبنٹ. اور کرائے کی کیبنٹ جو فیصلے تیل کی قیمتیں اوپر کر لے, وزیر جو پیٹرولیم کے ایڈوائزر ہیں, اس ملک سے ان کا کوئی تعلق نہیں, ان پر کتنے سے باہر ہے. آپ کی ہر پالیسی آپ کی عام دشمن پالیسی ہے. And the reason is because the cabinet is totally distanced from this house. اور جو بیچارے ہوں گے اکا دکا وہ بھی totally alienated ہوں گے. There is no sense of power in this. And اس لیے ہم بار بار ہمارے چیئرمین کا لفظ جو ہے وہ immortalize ہو چکا ہے, تاریخ کا حصہ بن جائے گا کہ یہ وزیر بھی سلیکٹڈ, یہ پرائم منسٹر بھی سلیکٹڈ, یہ کیبنٹ بھی سلیکٹڈ. Now let me come to the privatization issue. Janab Speaker, I'll quote Noam Chomsky, who is an American linguist and a philosopher, and what he says is so relevant to privatization in Pakistan. He says, technique of this, that's the standard technique of privatization. Defund, make sure things don't work, people get angry, you hand it over to the private capital. This is the story, the sad, heart-breaking story of privatization in Pakistan. ایک ہمارا قیمتی زیور, ایک ہمارا ریاستی ادارہ, اس کو پہلے آپ سٹاف کرتے ہیں, ان کو گیس نہیں دیتے, سرکاری ملازموں کو نوکریاں نہیں دیتے, اور انجنز کو تیل نہیں دیتے, پائلٹس کو آپ جیسے پی آئی اے میں گندا کرتے ہیں, پھر آپ سٹیل ملز کو گالی دیتے ہیں, پھر آپ پی آئی اے کو گالی دیتے ہیں, پھر عوام غصہ ہوتی ہے, پھر سب کوئی کہتا ہے کہ جان چھوڑو, اس کو بیچو. This is how you have privatized one institution after another. اور میں مذمت کروں گی جناب کووڈ-19 کے زمانے میں جب دنیا بھر کی معیشت ایک ڈپریشن کا شکار ہے, the prices have come down. اس وقت کوئی any thinking person, I'm not an economist, I'm not even a business person, but ask them جو businesses کر رہے ہیں, ان کی اپنی private cabinet کو بھی پتا ہوگا, ان سے پوچھیں, کسی ایک reasonable دکاندار سے پوچھ لیں, ٹھیلے والے سے پوچھ لیں, جو بھی خرید و فروخت کرتا ہے اس سے پوچھ لیں کہ جب دنیا کے جو ڈپریسڈ پرائسز ہیں وہ بیچنے کا ٹائم ہے یا خریدنے کا ٹائم ہے؟ مجھے بتائیں, بیچنے کا ٹائم ہے یا خریدنے کا ٹائم ہے؟ خریدنے کا ٹائم ہے. اور یہ لوگ سٹیل مل بھی خریدنا چاہتے ہیں, ہماری سندھ میں پریشس زمین کو خریدنا چاہتے ہیں, روزویلٹ کو بھی خریدنا چاہتے ہیں. Why do we say that? Because this is not the time to sell. اس وقت سٹیل مل آپ کا کون لے گا؟ اس وقت آپ کا روزویلٹ, آپ ٹرمپ نے آفر کیے, بڑے خوش ہو گئے کہ ہم ٹرمپ کو اپنے قومی اثاثے بیچیں. So we will not let you sell our state assets. اور اگر ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ڈس فنکشنل ان کو رکھیں, ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ آپ پی ایس سیز کو ریفارم نہ کریں, but there are alternate models جو آپ نے کنسیڈر ہی نہیں کیے جناب اسپیکر. Then on privatization, why privatization? خواجہ آصف صاحب بول گئے کہ everybody approves privatization. ہماری پارٹی کا موقف کچھ فرق ہے. Perhaps we are not totally opposed to privatization, لیکن پیپلز پارٹی believes کہ پبلک سیکٹر جو ہے that should drive the state. اور میں آپ کو ایگزامپلز دیتی ہوں, جب بھی دنیا ڈپریس ہوئی ہے, depression when there is disease, depression when there is war, depression
when there is disease like COVID, depression, when there's economic depression, 2007 वाला आप crisis, economic crisis देख लें, उस वक्त अवाम को कौन रेस्क्यू करता है? कोई मनशाज आके रेस्क्यू नहीं करते, कोई अलीम मुसरत टाइप लोग रेस्क्यू नहीं करते उस वक्त मुल्क को. उस वक्त मुल्क को रियासती इदारे रेस्क्यू करते हैं. और इस वक्त आप कोविड-19 में भी देखें, चारों सूबों से, मैं गिलगित बल्तिस्तान एजेके की बात नहीं करूंगी, चारों सूबों से जिस सूबे ने हेल्थ में, पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की है, उसने बेहतर परफॉर्म किया है, और वो सिंध है, जनाब स्पीकर. एंड दिस आई एम नॉट सेइंग दैट. आज आप HRCP की रिपोर्ट ले लें, वो भी आपको यही बताएगा. इट्स एन इंडिपेंडेंट बॉडी. सो जनाब स्पीकर, व्हाट इज द रीजन फॉर प्राइवेटाइजेशन? या तो आपकी एफिशिएंसी हो सिस्टम में, गवर्नेंस में, या आपका प्राइवेट सेक्टर बूस्ट हो और इकोनॉमी बूस्ट हो. पाकिस्तान में, मैं इधर पहले भी एक तकरीर में मैंने कहा था, मैं फिर रिपीट करूंगी कि एक कमीशन बननी चाहिए, नॉट टू प्राइवेटाइज पब्लिक सेक्टर एंटिटीज, बट एक कमीशन बननी चाहिए कि 90s, 2000s और अब तक जो न्यू लिबरल एजेंडा हमने फॉलो किया है, उसकी प्राइवेटाइजेशन से मुल्क को क्या फायदा हुआ, मुल्क को क्या नुकसान हुआ, क्या मईशत सुधरी, क्या बैंकिंग सुधरी, क्या इंडस्ट्री सुधरी? मुझे तो नहीं लगता. हमारी इकोनॉमी तो दिवालिया उसका हुआ है इस वक्त. क्या प्राइवेटाइजेशन ने किया होगा? अनफॉर्चुनेटली द स्टोरी ऑफ प्राइवेटाइजेशन इन पाकिस्तान इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ क्रोनी कैपिटलिज्म, which is again what I said कि आप अपना प्राइवेट एंटरप्राइजेस बेचते नहीं हैं, आप खरीदते हैं. And this is what has been happening over the years. मैं 3 एग्जाम्पल्स आपको दूंगी. बैंकिंग सेक्टर प्राइवेटाइज हुआ जनाब स्पीकर, तो बैंकिंग के मालकान अरबपति हो गए, खरबपति हो गए. बैंकिंग सेक्टर की प्राइवेटाइजेशन का यह मतलब था कि आप लिक्विडिटी अवेलेबल करें, अवाम के पास पैसे आए, छोटे छोटे बिजनेसेस बने. लेकिन आपने देखा है कि प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर जो है, इट हैज नेवर हेल्प्ड एनीबॉडी. सिर्फ और सिर्फ इस वक्त ये इंटरेस्ट रेट्स अप एंड डाउन पर बैंकिंग सेक्टर चलता है, एंड द गवर्नमेंट इज द बिगेस्ट बोरोअर ऑफ द प्राइवेट सेक्टर. तो बैंक्स खुश हैं और अवाम के पास पैसा नहीं है, न गरीब के पास पैसा है, न ही आपकी मिडिल क्लासेस के पास पैसा है. सो दैट शोज कि बैंकिंग सेक्टर की, आज भी प्राइम मिनिस्टर साहब से पूछें, आप प्राइवेटाइज कर रहे हैं, इस वक्त कौन सी बैंक आपका यूथ लोन दे रही है? आपका कौन सी बैंक जो है वो किसानों को कर्जा दे रही है? कौन सी बैंक आपके छोटे मोटे बिजनेसेस को कर्जे दे रही है? कोई प्राइवेट बैंक आपको कोई कर्जे नहीं दे रही. यूथ को कर्जे नेशनल बैंक दे रहा है, या विमेन बैंक, उस बेचारी को भी आप प्राइवेटाइज कर रहे हैं. एक ही औरतों की बैंक शहीद मोहतरमा की निशानी है, उसको भी आप प्राइवेटाइज कर रहे हैं जनाब स्पीकर. तो that shows how the banking sector has not delivered to the economy. The second is Etisalat. Janab Speaker, I need your attention for Etisalat. If it's getting too long, the speech, I'll wind up, but I think I want to put these points on record. Etisalat, PTCL, Janab Speaker, was one of the largest public sector टेलीकॉम बॉडी. और हमने पीटीसीएल किसको बेचा? जो प्राइवेटाइजेशन के हामी हैं वो बता दें. हमने पीटीसीएल जनाब स्पीकर प्राइवेट एंटरप्राइज को नहीं बेचा. हमने दुबई की, यूएई की पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को भेजा. दिस इज द स्टेट ऑफ प्राइवेटाइजेशन इन पाकिस्तान. और वो जिसको हमने बेचा वो इतने साइज की है. हमारे पास 30,000 मुलाजिम थे पीटीसीएल में. इन्होंने जाके जिसको बेचा वो यूएई की स्टेट एंटरप्राइज है, विच इज अगेन अ शेम. आज जोंग, आपका बहुत बड़ा सेक्टर टेलीकॉम का जोंग के पास है. जोंग इज नॉट अ प्राइवेट सेक्टर एंटिटी, इट्स अ पब्लिक सेक्टर एंटिटी. एंड फाइनली के इलेक्ट्रिक.
کے الیکٹرک کا کیا کہنے, اور کے الیکٹرک جو ادھر بار بار کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے زمانے میں پرائیویٹائز ہوئی تھی, یہ جنرل مشرف کے زمانے میں پرائیویٹائز ہوئی تھی, اور آج اتنے سال کے بعد بھی پروفٹس بن جاتے ہیں, پروفٹس کیمن آئلینڈز چلے جاتے ہیں, لیکن کے ای کے حالات نہیں سدھرتے, اور لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ گھنٹوں تک جاری رہتی ہے جناب اسپیکر. اور اس میں جو FIA کی رپورٹ ہے, ادھر بہت شور مچا رہے تھے, میں پھر ریپیٹ کروں گی کہ ایک شخص کا اس رپورٹ میں نام ہے اور وہ ہے وزیر اعظم, اور کہا گیا ہے کہ ان کا جو یہ کے ای کے ابراج کیپٹل ہیں ان سے ذاتی تعلقات ہیں اور فنڈنگ کا لین دین بھی ہے. یہ میں نے نہیں کہا جناب اسپیکر. the other reason for not privatizing is it creates monopolies. آپ کا شوگر کا ایشو دیکھ لیں. And finally, what is the alternative? The alternative is again آپ کے پاس جناب اسپیکر پرائیویٹائزیشن کا آلٹرنیٹو یہ ہے, چین کی آپ کی ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف ڈالرز کے فوریکس ریزروز پڑے ہوئے ہیں. They have not done it on the back of privatization, but they have done it through state capitalism and a mixed model. We propose, ہمارے اس وقت سندھ میں ایک ایکسلنٹ ماڈل ہے تھرکول. تھرکول جو ہے وہ شراکت ہے پبلک سیکٹر کی اور پرائیویٹ سیکٹر کی, جس میں پبلک سیکٹر کے 51% شیئرز ہیں, اور یہی میں سمجھتی ہوں کہ اس ملک کا حل ہے کہ آپ کو پبلک سیکٹر اسٹرینتھن کرنا ہے اور آپ کو پرائیویٹ سیکٹر میں پبلک سیکٹر کی شراکت ضروری ہے, so that there are no monopolies and so that the state becomes strong, اور اس قسم کی کرونی کیپٹلزم جو ہے اس کا خاتمہ. بہت شکریہ جی.